Good morning to all and respected ma'am, director ma'am, dean ma'am, and MS sir, and all my colleague faculties and nurses and my residents. ये एक हफ्ता जो 18 से 24 के बीच में हम करते हैं, तो इस साल भी और थोड़ा सा जोश से कर रहे हैं। पिछले साल जितना किए थे बोल सकते हो कि 10 to 20% एक्स्ट्रा हम लोग कर रहे हैं इस बार। एंड हमने कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं, ये प्रोग्राम शेड्यूल बता दिया। ये हमारा टारगेट रिजोल्यूशन से लास्ट ईयर भी हमने 10 रिजोल्यूशन लिए थे, पर इस बार हमने 12 रिजोल्यूशन लिए हैं और कोशिश करेंगे कि एक साल में इसको अचीव करने के लिए। एंड मेन टारगेट तो आप सभी को पता है, मैं 2 वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये सभी आप देख सकते हो, मैं जब स्लाइड आगे ले रहा हूँ इसमें ये इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, ये सब इसमें है। इसमें रिसेंटली एक लैंडसेट में ये पब्लिकेशन हुआ था, जो ये ग्राफ देख रहे हो। तो 2025 टू 2050 के बीच में दैट लैंडसेट ग्रुप होल वर्ल्ड में उन्होंने डाटा लिया है एक रैंडम बेसिस में हर कंट्री से। तो बताया गया है कि मोर देन 39 मिलियन डेथ होंगे एएमआर के कारण से इन नेक्स्ट 25 इयर्स। बट इफ we are not reducing this AMR burden by some way, तो देखते हैं हम। तो अभी 25 साल आगे जिंदा रहेंगे हम सभी लोग यहाँ पे जितने बैठे, तो हम देखेंगे 2050 तक हम कितना कम कर सकते हैं। एंड और एक आर्टिकल में आप सबको दिखाना चाहता हूँ जो नेचर में अभी रिसेंटली जस्ट अक्टूबर में पब्लिश हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि क्रॉस रेजिस्टेंस कितना बढ़ रहा है। हम लोग रिफैक्सिमिन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्पेशली हमारा हॉस्पिटल में सीएलडी बहुत ज्यादा पेशेंट आता है, क्रोनिक लिवर डिजीज आप सभी जानते हैं। तो उसमें एक्चुअली जैसे अपर जे ब्लीड हो गया बाय जे पार्ट ऑफ हेपेटिक एन्केफेलोपैथी प्रोफाइल से हम देते रहते हैं। तो रिफैक्सिमिन में दिखा गया कि जो भांकोमाइसिन रेजिस्टेंस है कि एंट्रोकोका ये वीआरई, उसमें एक ब्रह्मास्त्र का एक मेन ड्रग होता है डाप्टोमाइसिन। जब भांकोमाइसिन रेजिस्टेंस है हम डाप्टोमाइसिन देते हैं, पर वो डाप्टोमाइसिन के साथ फुल्ली रेजिस्टेंस है। जो रिफैक्सिमिन देखा गया जितने पेशेंट को मिला है एक्चुअली वो सब वीआरई डाप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस पाया गया है। तो ये भी एक माने कोइंसिडेंस बोल सकते हो, हमारा नेचर के लिए एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन है कि हाउ क्रॉस रेजिस्टेंस इज बीइंग इंक्रीजिंग। और कोई ना कोई हम लोग थोड़ा सा रेस्पॉन्स तो लेना ही पड़ेगा, प्रोबेबली वी आर द कॉज। एंड ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग आल्सो इवॉल्व विद टाइम। बट इस बारे में 2 पब्लिकेशन साइट से जो सब कुछ एक्चुअली दिखा सकता है। आप 5 मिनट के अंदर एएमआर के बारे में जान सकते हो। एक डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट और एक लैंडसेट। लैंडसेट 2015 के बाद अपना सीरीज देता रहता है कि एएमआर कैसे बढ़ रहा है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें यही बताया गया था कि एक 10, 20, 30 टारगेट दिया गया है, शायद हम लोग ये कर लेंगे तो अच्छा है। उन्होंने बताया कि 2030 तक 10% एएमआर कम हो सकते हैं हम लोग, 20% हम एंटीबायोटिक सही यूज करें, और अपन जो रॉन्ग यूज कर पा रहे हैं हमारा तरफ से इनअप्रोप्रिएट यूज, इफ वी कैन रिड्यूस 20% इनअप्रोप्रिएट यूज तो 10% एएमआर मोर्टालिटी कम कर सकते हैं। उन्होंने और एक 30% टारगेट भी दिया है कि इफ एनिमल सेक्टर में 30% रिडक्शन हो सकता है एंटीबायोटिक यूज, तो प्रोबेबली 10% एएमआर के डेथ कम हो सकते हैं, अदरवाइज वी विल बी एक्चुअली द लूज साइड। डब्ल्यूएचओ भी ग्लोबल एक्शन प्लान दिया है, आप सब देखे होंगे ना इंटरनेट वगैरह में। 2017 से स्टार्ट हुआ है, उनमें 5 एजेंडा लिखा था। बट उसी रिगार्डिंग एक्चुअली हमारा इंडिया में भी एक्चुअली हम लोग एक स्टेट कंट्री में नेशनल एक्शन प्लान करते हैं, और एक यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आप सभी जानते होंगे। बिकॉज डब्ल्यूएचओ के सपोज टोटल होल वर्ल्ड में कुछ देखता है, एक पैरेंट अम्ब्रेला है वो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक्चुअल देखोगे कि हमारा 4 कैटेगरी है जो हमारे हेल्थ रिलेटेड है। उसमें तो मेन कैटेगरी है कि एसडीजी 3 है, जो उसमें भी बताया गया है कि एएमआर के बारे में बताया गया है, और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन उसके बारे में कैसे एएमआर कम कर सकते बताया गया, और रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये मेनली एंटीबायोटिक के ऊपर, पर ऑल द ड्रग्स आर देयर इन दिस। एंड लास्टली द पार्टनरशिप गोल, ये 4 गोल यूएन ने भी बताया गया। तो ऐसा नहीं कि आज के टाइम में कोई ऐसा और नेवर है एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल पब्लिक की एएमआर एक चिंता का विषय नहीं है। तो हम सभी के पास ये चिंता का विषय है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारा स्टेट एक्शन प्लान भी बनाया गया। आजकल पता होगा कि केरला ने पहले स्टार्ट किया, फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर दिल्ली, अभी रिसेंटली हमने उत्तराखंड के अंदर भी स्टेट एक्शन प्लान स्टार्ट किए। तो प्रोबेबली नेक्स्ट 6 मंथ में हमारे भी एक्शन प्लान रेडी हो जाएगा। बट सिंस हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो हेल्थ चाहे स्टेट चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है, और एम्स भी स्टेट के अंदर ही आता है। नो डाउट वी आर फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सिंस वी आर लिविंग इन द उत्तराखंड, तो डेफिनेटली उत्तराखंड का जो स्टेट हेल्थ पॉलिसी हमको फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो इसी हिसाब से एक्चुअली हम लोग स्टेट एक्शन प्लान भी
भाग लेना चाहिए। उसमें भी 6 एजेंडा दिया गया है। ये नेशनल एक्शन प्लान के अंदर आता है, स्टेट एक्शन प्लान। एंड नेशन के तरफ से भी एक्चुअली आईसीएमआर ने हर साल एक एनुअल रिपोर्ट देता है कि क्या-क्या एएमआर बढ़ रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होता है, वो एक एएम आईसीएमआर एएमआर नेट है, उसके अंदर आते रहते हैं। और रिसेंटली आपने सभी जानते हो कि एनएमसी हमारा जो नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग है, एंड आई होप एक्चुअली नर्सिंग साइड में भी उनके मेडिकल काउंसिल में एंडर्स हो चुका है कि आपको एएमआर के बारे में स्टूडेंट को बताना जरूरी है, रेसिडेंट को आपका हर ट्रेनिंग में रहना चाहिए। तो ये भी ये 2024 में ये रिलीज हुआ। तो इसका मतलब 2015-17 से लेके और ये 2024 तक हम लोग थोड़ा सा इवोल्यूशन के हिसाब से बहुत आगे आ गए। बट रिजल्ट देखो, अभी एम्स ऋषिकेश में मैंने एक स्टडी किया था, पूरा एक्चुअली एक पॉइंट प्रिवेलेंस स्टडी, ये 2 साल का एक्चुअली डाटा है। 2022-23 में हमने देखे कि टोटल पेशेंट हमारा 4000 पेशेंट के आसपास डेथ हुआ है, टोटल डेथ। और टोटल डेथ में सेप्टिक शक 50% है, बिकॉज हम टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, ज्यादा रेफरल पेशेंट आते हैं तो डेफिनेटली हमारा पेशेंट मेनली सेप्सिस से मरते हैं। और ये 50% डेथ के अंदर दिखा गया कि 75% एक्चुअली जो एएमआर रिलेटेड है। और कुछ तो कारण हमको लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल बाहर से आते हैं और इसलिए हमने एंटीबायोटिक दे देते हैं, ऐसे मर गए, ऐसा नहीं। आप प्रेस्क्रिप्शन का ऑडिट हमने किए थे, एक्चुअली हमारे ग्रुप है तो उसमें ये देखा गया है। आप देख सकते हो ये जो ब्लू ग्राम है, ये एम्पेरिकली 50% पेशेंट का प्रेस्क्रिप्शन है। एक 1 डे का पीपीएस स्टडी है, 50% इज ओके एम्पेरिकली, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि टर्शियरी केयर रेफरल आते हैं तो ऑटोमेटिकली 50% हम एक्चुअली हम लोग को एम्पेरिकली देते हैं। पर यू सी दिस एक्चुअली ग्रीन ब्लू वाला पार्ट, ठीक है, ब्लू वाला पार्ट एक्चुअली रिफ्लेक्ट द प्रोफाइलैक्टिक, इसमें मेनली सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, और ये सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस मोर देन 24 आवर वाला एंटीबायोटिक लिया गया है। पता है कि हर सर्जरी से पहले 30 मिनट के अंदर या 60 मिनट के अंदर एक एंटीबायोटिक देना है, तो वी हैव एक्सक्लूडेड दैट, दो एक्चुअल जो गाइडलाइंस में दिया गया। जो मोर देन 24 एंटीबायोटिक मिला गया है, वो बताया गया है कि अराउंड 30% केसेस हमारा एंटीबायोटिक मिलता है जो सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस के नाम से ज्यादा दिन तक चलता रहता है। और कंफर्म केसेस 10%, तो ये शायद हम चेंज कर सकते हैं। और एक एक्चुअली डबल एंटीबायोटिक कवरेज जो रिडक्टेंट कवर बताते हैं, डबल एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव के लिए चल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सेप्टिक शॉक आता है, हम ग्राम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, सीडोमोनास एसिनोबैक्टर क्लेफ्सिला, तो डबल दे सकते हैं। बट डबल ग्राम पॉजिटिव ये हजम नहीं होता, ये 20% या 30% में डबल ग्राम पॉजिटिव कवर दिया गया है। और डबल अनएरोबिक कवर, ये सबसे वाला जो खराब की चीज है, जैसे पिपरेशन टाइजेबैक्टम प्लस मेट्रोनेजल, पिपरेशन टाइजेबैक्टम प्लस क्लिंडामाइसिन, मेरोपिनम प्लस मेट्रोजिल, जितने भी मेट्रोजिल और क्लिंडामाइसिन हम मानते हैं कि अनारोग्य अच्छा कवर करता है, पर उसके साथ जितने भी बीटा लैक्टम ग्रुप होता है वो सब एक्चुअली अनारोग्य काम करते हैं, तो वो डबल अनारोग्य कवरेज अच्छा खासा 35 to 40% केस में मिला है। तो ये हम कम कर सकते हैं। तो जब तक ये नहीं कम करेंगे, हम बोलेंगे कि कम हो जाएगा, एमआर का राइजिंग कम हो जाएगा, तो शायद संभव नहीं है। तो सॉल्यूशन प्रोबेबली दिस ड्रग डिस्कवरी इज नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज लास्ट 20 इयर्स में सिर्फ एक्चुअली देखोगे तो 10 अच्छा एंटीबायोटिक आया है मार्केट में, पर ये सब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये ले लीजिए सेफेबाइप्रो ले लीजिए, सल्बाक्टम डोलोबैक्टम ले लीजिए, सेफिडोरोकोल, ये हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है और शायद आगे 5 या 10 ईयर्स में आएगा भी नहीं है। ये डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं और डेवलपिंग कंट्री में वही पुराना ड्रग हमको दिया गया है, उसी से हमको गाड़ी चलाना है, तो ऑटोमेटिकली वी शुड बी ऑप्टिमल यूटिलाइज आवर एंटीमाइक्रोग्राम। इसके लिए शायद इंटीग्रेटेड एंटीबायोटिक इज द ओनली सॉल्यूशन। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि तीनों चीज एक साथ आना चाहिए। इन्फेक्शन प्रिवेंशन हम अच्छा करेंगे तो शायद एंटीबायोटिक जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि सही डायग्नोसिस करेंगे तो सही एंटीबायोटिक का मतलब होता है। एम्पिरिकल का मतलब है कि हमको डायग्नोसिस पता नहीं, हम एम्पिरिकल दे रहे हैं, पर डायग्नोसिस पता नहीं इसका मतलब नहीं कि इन्फेक्शन नहीं है। हमारा टारगेट रहना चाहिए कि एक इन्फेक्शन है, इसका एक जीवाणु हो सकता है, उसी जीवाणु को मारने के लिए एम्पिरिकल देते हैं। ये जो टारगेटेड थेरेपी है, ये माइंड में आ जाएगा तो सो दैट ऑप्टिमल एंटीबायोटिक यूटिलाइजेशन हो सकता है। To conclude my session, I want to show this video.
I request now MS sir, Mittal sir to say a few words. Respected Director Madam, Dean Madam, Professor Mandal Sir, all the HODs, the department, faculty of nursing, all the organizing team members of this, all the nursing staff, residents. This event, the stewardship of antibiotic microbial resistant awareness. In fact, this is the need of our currently, and we all are facing in our clinical practice. We are giving, and as Dr. Panda showed you the slide, almost 50%. I mean, shock sepsis, uh, and we are prescribing antibiotics, and resistance is occurring. So the main reason is whether to prescribe antibiotic. Number one, number two, which is the judicious. What is the judicious use of antibiotic? So that we all are equally responsible, whether we are doctors, nurses, that whether when while we are treating our patient with the antibiotic, besides treating, we have to take care the patient should not develop resistance to this antibiotic, and the antibiotic use is judicious. In fact, one of the very important factor is that several antibiotics are available at counter sale to the chemist all across. And in fact, I remember once our previous health center health minister had visited here. That time, Director Madam actually emphasized him as well about this matter that across the count, I mean, the sale of antibiotic on it should be with prescription, not just anybody can walk in just and ask कि मुझे ofloxacin के tablet दे दो, and there were some at several places that even the chemist or directly give antibiotic to the patients. Someone comes, मुझे बुखार हो रहा है, they prescribe medicine, paracetamol and antibiotic. So those things should be come. That really is required. But besides that, at our hospital, we have to look for that. So this program is awareness among the public also, so that they should not ask they should not just walk into the chemist shop and ask for some antibiotic for a fever or something. And secondly, even the chemist. So the beauty of this, I mean, this program, like one Dr. Panda was discussing the schedule, he said they have a walkathon. So I suggested that every program is having a walkathon on the Asthapat. So what is the motive of actually, do you think you are making people aware? I mean, and in the town, in the city, if you make a walkathon, this is a traffic issues then. So it's better, why don't you just try that public lecture is a common place? So they thought of at the Vedic Ghat, they would be having a public lecture just before the Aarti to address a gathering there. But much more important than that, they are doing it, they are covering medical stores in Rishikesh. So that's a very good message. And if such thing spreads to other medical fraternity, other hospitals across the nation, please sensitize your medical store people as well. You don't prescribe on the counter, don't give antibiotics. So I think like media can also help, and we will try to disseminate this event through the media as well, and this part, so that at least through the media also and through their efforts along with the team of community medicine. I mean, this is a program jointly organized with the medicine department and community medicine, pharmacy, pharmacology, microbiology, and our nursing all are involved into it. So it will come up very nicely, and I think hopefully it will have some positive results gradually. With that, my all the best wishes to all the organizers and everyone. Thank you very much. Thank you, sir. I welcome Dr. Ravikant to give one example of a department how actually can be a role model, because it's essential for all our other clinical departments are there. एक साथ ही हम सब बढ़ते हैं, बट एक को हम लीड स्टार्ट कर सकते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। रविकांत सर। Good morning all, respected Director Ma'am, Dean Madam, MS Sir, senior faculty members, my colleagues, and faculty and uh, nursing tutors, other unit staff, and friends.
I think this is one of the important agenda that we are going to discuss in next 7 days. And we have developed some in-house programs in the Department of Medicine, which we are regularly conducting just to make the nursing officers, the staff aware about the antimicrobial stewardship. And first of all, we are conducting this basically clinical meet on every Monday afternoon, once in 2 weeks. This is basically changed in the department from Unit 1, Unit 2, and ICU. We take a case, it is presented in front of nursing officers and other stakeholders in the department, and then we discuss and we have a carry-over message for these nursing officers, staff, and message for the public also, which is a regular activity on record with us. Second, we have generated work on clinical antiviral for the ICU, and we are adhering to the clinical antiviral that has been generated by the Department of Medicine. And whenever there is a need of any antibiotic to be used in the department for more than 5 days, this is properly documented and utilization is strictly monitored. And we encourage more and more OPAC, that is oral parenteral therapy for antibiotics. Once we say that patient is relatively stable, can be taken care at home or maybe at some other domiciliary care. So the booklet is every year released for the right diagnosis and right treatment for all infections across the specialty in the institute, and this year also we are going to release the same. And we have more activities for residents and CNEs going on simultaneously in the department. And this is the seventh program which we are conducting as a WAAW week without any failure. Even during the COVID, the program was attended by online and conducted online by the stakeholders. And with this, I congratulate Dr. Prasanna Kumar Panda to have a leadership role in going ahead with this WAAW week. The only submission is we are developing countries. Everything strictly is not possible in our setup. We have to be realistic and practical. We have to see the patient, the concerns and the family concerns. And I think it will take a little more effort to, be strictly adhering to the prescription base, which is not the role of a clinician, which is a regulatory role basically. We can advocate the regulatory authority just to go ahead with the prescription-based dispensing of antibiotics and other essential medications. With this, I thank you all very much. Thank you, sir. I request Dean Ma'am, Jaya Ma'am, to have a few words for all of us. Good morning, everyone. Respected Director Ma'am and all the dignitaries present here. I congratulate the departments who are organizing this antimicrobial awareness week. And I really thank all the people who are present here. मैंने सभी को dignitaries कहा है. Everybody who is present here for this important cause to reduce antimicrobial resistance is a hero. We should work together as the theme is educate, advocate and act now. इसी में अभी डॉक्टर पांडा ने जो प्रेजेंटेशन दिखाया उसमें एक बहुत सिंपल सी चीज लिखी हुई थी, बिना चिकित्सकीय सहायता के मतलब परामर्श के कोई दवाई न लें. What we will do for those people who are giving एक पुड़िया में 7 दवाइयां भर के दे देते हैं. We have to educate them, the quacks, the RMPs. उसमें एक स्टेरॉइड होता है, एक एंटीबायोटिक होती है, and lot many drugs are there. They are developing the resistance. हम अपने institutions में बैठकर ये सारी बातें करते हैं, but we should reach to those people. As Dr. Mittal said, in this antimicrobial awareness efforts, we are reaching to the pharmacy people, chemists. Along with that, we should reach to these people also who are sitting till villages and they don't know how they are practicing. We have to make them aware and we can reduce the antimicrobial resistance as developed countries reduced. They are not allowing the people to take the drugs directly from the chemist shop, etc. They are having barriers. You have to go to first line clinicians. They will prescribe something which is just
to decrease the symptoms. And after that, they have to show the senior people or second line of treatment people. Then they will able to prescribe after the investigation, if necessary, the antibiotics. And rightly said, we are having 50% of septic shock because of all these things. Patients are not coming directly to us. They are coming after visiting so many hospitals where they are getting so many antibiotics. Until they reach to our tertiary care centers, they are totally resistant. So we have to make efforts combinedly. Thank you. Thank you, ma'am. I request Director ma'am to have a few words. Yes, ma'am. 5 minutes. Yes, ma'am. Good morning to all the dignitaries. I request everybody to repeat after me the quote for the World Antimicrobial Resistance Awareness Week 2024. So, as a healthcare professional, I recognize that antimicrobials are vital in saving lives. I also acknowledge the alarming rise of antimicrobial resistance threatening global health. I pledge to accept antimicrobial resistance is rising and I'm here to decrease it. Uh, I pledge to promote integrated antimicrobial stewardship practices by preventing and controlling infections, doing right investigation and treatment for right patient at right time, foster source control and always follow standard precautions for all patients, audit hand hygiene and environmental cleaning practices, also advocate and use adult vaccination. I pledge to adhere to facility-specific treatment recommendations for infectious diseases based on national guidelines and local antibiograms. Use standard operating procedures for specimen collection, storage and transportation. Prescribe or use antimicrobials judiciously, considering the diagnosis, severity, and local resistance patterns. Restrict to back foot the reserved antimicrobials. Optimize antimicrobial use through regular documentation and review. I pledge to educate myself, my family members, patients, and their caregivers on infectious diseases
their chain of transmission, and their cure with antimicrobials. I acknowledge One Health, caring for others, and also care for myself. By taking this pledge, I commit to being a responsible healthcare professional and protecting human beings from antimicrobial resistance. Thank you. Thank you. Uh, just 1 minute. We will have a release of two documents. I request Dean Ma'am to come here because it is a e-release. नीचे का क्लिक करना है नीचे से कर सकते हैं। हाँ हाँ तो नीचे से ही तक कर एक मिनट। यहाँ से करें हाँ। ओके नहीं मैम, क्या है फिर पीछे चला गया, कोई नहीं। धीरे धीरे उससे क्यों आ गया हाँ, इससे वही वाला ऊपर वाला था। किसको सबसे नहीं, पहले ये पेज इसे दबा दो ओके राइट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट दिस बुकलेट वी हैव रिलीज मैम, और कुछ है और भी है Yeah. ओके This is the adult vaccination we are releasing actually in our book. So each healthcare worker which vaccination taken. Now I request Dr. Banya to release the clinical antibiogram. MSR I request MSR to please come and release the antibiogram. एंटीबायोग्राम आजा दोनों लोग और एक अभी कुछ और भी है हाँ तो चलिए आइए क्या है ऊपर वाला all these documents will be available in the AIMS Rishikesh website, and hard copy will be given in the areas. What is this PKPD? This is pharmacokinetic and dynamics of each antibiotic, because हम लोग जैसे फार्माकोलॉजी में क्लास में पढ़ते थे एंटीबायोटिक किसका एक्चुअली किस रूट में ज़्यादा अच्छा काम करता है, किस में इसके साइड इफेक्ट क्या होती है, उसके थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और हमारा ड्रग इंटरेक्शन क्या होती है। तो मैम हमने 20 एंटीबायोटिक जो कॉमनली यूज करते हैं हमारा एक्चुअल सेक्टर में, तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी डॉक्टर भूपिंदर एंड डॉक्टर ऑल द फार्माकोलॉजी टीम दे हैव मेड दिस, and this is a 3-page document, and we'll release in our AIMS Rishikesh website, and everyone can see and use in practices. Okay. On the lighter note, it is PKPD, PK Panda.